Good morning. नमस्कार. वॉइस आ रहा है? बंदा खुश हो कि नहीं, खुशियां नी. बंदा खुश हो कि नहीं. बोलो रे. बोलो रे. चलिए. खुश है. अरे पानी. एक सेकंड. चलो सर जी. प्रणाम गुरुदेवों को. बड़े बड़े लोगों को प्रणाम. सर जी. चलो चलो. And what I am planning is, first let me complete theory in this crash course. Then I'll be doing only questions on complete applied thermodynamics. Only questions. पहले psychrometry complete करेंगे, numericals that may be either on YouTube or special class. Will that be fine? बोलिए जी. हाँ या ना? So theory digest हो रहा है sir? Are you in a position to digest theory? Theory अच्छा आ रहा है ना? Because theory is very important. Once theory is digested properly, then we can go for numericals. बोलो रे. बोलो रे बाबा. बाबा बोलो. बोलो रे बाबा. बाबा बोलो. चलो, let's start. Now we'll start. Yesterday we saw Rankine cycle. Now today we'll see Brayton cycle. Rankine cycle is vapor power cycle, sir. Rankine cycle is vapor. Rankine cycle is vapor power cycle. ये वाला है गैस पावर साइकिल. ठीक है सर. ना रेडी है सब लोग? मौन कुमार, आप मौन नहीं है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है. चलो, लेट्स स्टार्ट. We have two cycles in this. One is open cycle, one is closed cycle. सर ये ओपन साइकिल कैसा होता है सर? हाँ हाँ हाँ, डोंट वरी, डोंट वरी, विल डिस्कस बोथ. नाउ द वर्किंग फ्लूइड इज gas. We generally treat that working fluid as an ideal gas. Okay, mostly we have air. Mostly the working fluid is air. Will it be fine, sir? चलो अब देखेंगे व्हाट इज दिस साइकिल. देखो, बिफोर वी गो टू एनालिसिस बाद में देखेंगे, फर्स्ट विल सी साइकिल. देखो, रिवर्सिबल पहले मैं प्रोसेस लिखता हूं, देन देखो 1 to 2. नहीं, क्या लिखेंगे सर? एक सेकेंड, आराम से. प्लीज नोट डाउन दैट वन मोर थिंग. गैस टर्बाइन्स आर रोटरी डिवाइसेस. आईसी इंजन, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल वो रेसिप्रोकेटिंग डिवाइसेस है. गैस टर्बाइन्स में जो टर्बाइन यूज करते हैं, जो कंप्रेसर यूज कर सकते हैं, वो है रोटरी डिवाइसेस. तो इसीलिए हाई स्पीड्स कैन बी ऑब्टेन्ड. रेसिप्रोकेटिंग में हाई स्पीड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड. द रीजन इज, एक साउंड में छोटा करता हूं सर. देखो, रेसिप्रोकेटिंग में व्हाई हाई स्पीड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड? ड्यूरिंग रेसिप्रोकेशंस देयर इज अ फ्रिक्शन. So if the speed is high, reciprocations will be more. If reciprocations are more, friction will be more. If friction is more and there is a huge loss, that's why high speeds are
not possible in reciprocating. So that's therefore in IC engine speeds are limited. लेकिन gas turbines में which are rotary devices, the सुनो carefully, the speed का कोई constraint नहीं है sir, except like at high speed centrifugal forces may come, that is a different issue, but otherwise there is no problem. ठीक है sir. Now let's see, uh, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and finally 4 to 1. ठीक है sir. 1 to 2 is reversible adiabatic compression. ये किस डिवाइस में हो रहा है सर? ये किस डिवाइस में हो रहा है सर? दिस इज अकरिंग इन ए कंप्रेसर. सो व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेसर इज दिस सर? इट इज अ रोटरी कंप्रेसर. इट इज अ रोटरी कंप्रेसर. ठीक है सर. देन 2 to 3 is constant pressure heat addition. Constant pressure heat addition. Very good. 3 to 4 is reversible adiabatic expansion. ये किस में हो रहा है सर? दिस इज अकरिंग इन टरबाइन. सो यू मे बी वंडरिंग सर फिर ये किस में हो रहा है सर? दिस में अकर either in combustion chamber or heat exchanger. ठीक है सर. Now 4 to 1 is constant pressure heat rejection. Heat rejection. Excellent sir. This is the cycle. First I'll discuss closed cycle gas turbine, then we'll go to open cycle gas turbine. यहां तक सभी को क्लियर है सर? My dear loving students, जनरली गैस टर्बाइन्स में वी यूज एक्शियल फ्लो कंप्रेसर्स. रोट देखो, अगर मेरा पावर प्लांट का कोर्स देखेंगे जो मैं आईईएस के लिए पढ़ाया, उसमें कंप्रेसर्स बहुत डिटेल में पढ़ाया. प्लस पे देखो, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, and then in rotary we have discussed two types of compressors, that is axial flow and centrifugal flow compressors. Generally centrifugal flow compressors are used in vapor compression cycles and what I say supercharging of IC engines. लेकिन एक्शियल फ्लो कंप्रेसर्स आर यूज्ड इन गैस टर्बाइन्स. पूछ सकता है सर, वो सम पीएसयूज कैन बी आस्क्ड, लेकिन मैं रीजन के साथ बताया था सर. कहां पे? प्लस क्लास में. बिकॉज प्लस क्लासेस आई गिव इट इन वेरी डिटेल्ड मैनर. एज इट इज अ क्रैश कोर्स, बिकॉज आई हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं दे सकता हूं. उसके लिए मुझे माफी भी नहीं चाहता हूं, बिकॉज देयर इज अ टाइम कंस्ट्रेंट. फॉर दोस क्लासेस देयर इज नो टाइम कंस्ट्रेंट, इसलिए आई गिव इन वेरी डिटेल्ड मैनर. यस सर. यस सर. यहां जितना भी पॉसिबल है आई एम गिविंग. ठीक है सर जी. नाउ देखो, दिस इज द साइकिल. चलो लेट्स ट्राई टू रिप्रेजेंट द साइकिल ऑन द डायग्राम. देखो सर जी, लेट अस टेक पीवी डायग्राम and let us take TS diagram. What is the working fluid, sir? Working fluid is gas. Generally we use air as the working fluid. यहाँ पे air हम working fluid use कर रहे हैं. अब देखो, what is 1 to 2, sir? Reversible adiabatic compression. During compression, volume decreases and pressure increases. So therefore, this is the isentropic compression. Already you know how to draw isentropic lines on PV diagram. In thermo we have studied isentropic lines. So ये मेरा compression process है sir. देखो, we are starting at 1 and we are ending at 2. This is reversible adiabatic compression. ठीक है sir. And what is 2 to 3? Constant pressure heat addition. How are constant pressure processes? They are horizontal. Constant pressure processes are horizontal. And you know very well, PV is equal to MRT. Mass तो constant है, R तो constant है. देखो, what is 2 to 3? Pressure is constant. When pressure is constant, volume is directly proportional to temperature. जब आप heat supply कर रहे हैं, so temperature will increase. When the temperature is increasing, the volume is also increasing. So therefore, constant pressure heat addition is like this. This is 2 to 3. During this process, there is a supply of heat. Absolutely fine. Wonderful, sir. Now, what is 3 to 4? Reversible adiabatic expansion. During expansion, the pressure decreases and volume increases. So therefore, this is my 3 to 4. Mitro, yes, this is my 3 to 4. Excellent, sir. Now, 4 to 1. What is 4 to 1, sir? Constant pressure heat rejection. And you know very well, मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकंड, सर. हाँ. So, heat supply is right, heat rejection is left. This is the heat rejection. Absolutely fine.
This is the representation of a brake. इसको बोलते हैं gas turbine cycles work on Brayton cycle. Gas turbine cycles, sir. Praveen sir, in an academy batch class held daily of two subjects like morning and evening. So generally मेरे timings plus पे होते हैं. I take morning 7 to 10, then I'll give a break of half an hour, then 10:30 to 12:30. So generally I take 5 hours class, but Monday to Friday only. Saturday, Sundays I don't take classes. So ये मेरा schedule है. And on plus I taught all subjects. अभी तक पूरे subjects जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग गेट और आईएएस के लिए all I have taught except a few portions of production. तो आप बोलेंगे how can a single teacher teach so many subjects? तो you just see the quality. I am not saying anything. एक एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आई प्रिपेयर्ड फॉर वन ईयर. ऐसा नहीं कि दिस इज माय 25th ईयर ऑफ टीचिंग. ऐसा नहीं कि एक ही साल में सारे पढ़ा है ना. देखो, so whenever I start a new subject I take lot of time. Lot of time का मतलब I generally I take around 8 to 9 months to prepare for a single subject. Okay, चलो चलो स्टार्ट करें. Now, let us represent the same cycle on TS diagram. What is 1 to 2, sir? 1 to 2 is reversible adiabatic compression. But what is reversible adiabatic? Reversible adiabatic is isentropic. So on TS diagram, how are isentropic lines? Vertical. Entropy is constant. But vertical means it may be upwards or it may be downwards. But this is compression. During compression, the temperature increases. So as the temperature is increasing, so it is a vertical line in upward direction. So therefore, this is reversible adiabatic compression. The same process 1 to 2. This is on PV coordinates. The same process 1 to 2. This is on TS diagram. Because during compression, the temperature is increasing. Up to this, is it clear, sir? Yes, sir. Now, what is 2 to 3? Constant pressure heat addition. We have studied in thermodynamics. If this is a TS diagram, Mitro, this is constant pressure process, this is constant volume process. And on TS diagram, constant pressure lines are curved with a positive slopes and constant volume lines are curved with a positive slope. The slope of this will be T by Cp and the slope of this will be T by Cv. As the value of Cv is less than Cp, therefore Cv constant volume का slope ज्यादा होता है. Because Cv देखो, इसका slope है T by Cp और इसका slope है T by Cv. As Cv is less, this slope will be more because it is in denominator. Therefore, constant pressure lines are like this. Am I right, sir? देखो, ये है sir. So therefore, 2 to 3 is a constant pressure process. But why are you moving upwards? Because it is a heat addition. During heat addition, the temperature is increasing. Therefore, this is 2 to 3 process. इसमें हम heat को supply करेंगे. बहुत बढ़िया. Now, what is 3 to 4? Reversible adiabatic expansion. What is reversible adiabatic? Reversible adiabatic is isentropic. ये isentropic is vertical. So यहाँ पे expansion में temperature घटता है. So therefore, this is reversible adiabatic expansion, mitro. This is reversible adiabatic expansion 3 to 4. Wonderful. This is occurring in turbine. Wonderful. Now, then last one is constant pressure heat rejection. Constant pressure lines are like this. This heat supply is upwards, heat rejection is downwards. This is constant pressure heat rejection. So यहाँ पे there is a heat rejection. This is our Brayton cycle or gas turbine cycle on TS diagram, and this is our Brayton cycle or gas turbine cycle on TS diagram. Hope you have understood the basic cycle. Is the basic cycle clear, sir? Is the basic cycle clear, sir? Absolutely, absolutely. Now let us start the analysis. मेरे प्यारे बच्चों, let us start the analysis. Look at now analysis of the cycle. Before I go to the analysis, let's see what is happening, my dear students. So as I told you, there is a closed cycle gas turbine, there is an open cycle gas turbine. एक बार देख लेंगे सर, ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों. Let us take, this is the compressor. The air is entering, okay. Where from this air is entering? Let us say this is state 1. Where from this air is entering? अब बताइए. Where from this air is entering? Anyone? Atmosphere. Atmosphere. So from the atmosphere, the air
At a pressure P1, at a temperature T1, it is entering the compressor. Let me write this as C. This is the compressor. So after compression, the air is leaving at stage 2. So 1 to 2 is occurring in compressor, and we are assuming this process to be reversible adiabatic. So therefore, yeah, already I have represented on PV and TS diagram. This is the compression. यहाँ तक clarity आ गया सर सभी को? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक clarity आ गया सर? बिल्कुल आ गया सर. Now, then what is 2 to 3? ध्यान से सुनो. There is a device known as combustion chamber. CC stands for combustion chamber. Combustion chamber. Okay. तो यहां पे फिजिकली क्या हो रहा है एक बार देखेंगे. हाई टेम्परेचर देखो व्हाट इज कमिंग सर. यहां पे तो एयर है. ओनली एयर इज कमिंग आफ्टर कंप्रेशन. एयर इज एंटरिंग. लेट MA be the mass of air which is entering the compressor. So there is a combustion chamber. यहां पे क्या होता है. फ्यूल इज इंजेक्टेड. तो हाई टेम्परेचर एयर आफ्टर कंप्रेशन द टेम्परेचर ऑफ एयर विल बी हाई. दैट एयर इज कमिंग. नाउ द फ्यूल इज इंजेक्टेड. तो क्या होगा. एयर एंड फ्यूल विल अंडरगो कंबशन. दैट्स व्हाई आई सेड इट इज अ कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन. यहां पे तो आफ्टर द कंबशन द fluid is leaving at state 3. 2 to 3 देखो at 2 it is entering. At 2 it is entering. After burning it is leaving at 3. So now you may be wondering. देखिए ध्यान से 3 से क्या क्या आएगा सर. 3 से क्या क्या आएगा बोलो. देखो एयर कंप्रेसर में तो देयर इज ओनली एयर. सिर्फ एयर इधर आएगा. उसके बाद फ्यूल आएगा. दे बर्न. Once the combustion has taken place, there is no more fuel, there is no more air. It is burnt products, combustion products. That's why I write gases. And those gases are air plus fuel. There is always conservation of mass. Air mass is coming, fuel mass is coming, and these are nothing but your gases. Absolutely fine. Hope you have understood. What is coming out from the combustion chamber, sir? Burnt gases. अरे यार कुछ तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों. कुछ तो बोलो. से समथिंग डियर. हाँ है ना. हे भगवंता. आज संजू नहीं आया रे. ओके. सो नाउ देन यहां से एट स्टेट 3 इट एंटर्स टर्बाइन. सो दिस इज टर्बाइन. तो फ्रॉम द टर्बाइन आफ्टर डेवलपिंग पावर. अरे यार मेरे दिलदार मेरे. अरे यार मेरे दिलदार मेरे. वेट. कुछ ना कुछ तो सेंस किए होंगे आप. नहीं किए सर. करेक्ट. सही तो लिखे थे. पता नहीं क्यों रब किया. आई डोंट नो. ओके सर. देखो कंप्रेशन एंड द गैसेस आर कमिंग आउट. दीज आर बर्न्ट गैसेस. ठीक है. अगेन दे मूव आउट टू एटमॉस्फेयर. हैव यू अंडरस्टूड सर. अगेन लेकिन इस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है सर. what is these burned gases enter turbine, they develop power. ठीक है सर. ये shaft work आएगा सर. but who has to run the compressor? Compressor is not a prime mover. It will not run of its own. Someone should supply power to it. So therefore to run the compressor you have to supply some power. So if the turbine is developing say 100 units of power, if the turbine is developing 100 units of power, some power is used to run the compressor. So that's why I'm coupling it on the same shaft. Dekho, suppose the turbine is developing 100, out of 100, let us say 40 units is taken by the compressor. It is developing 100. अरे यार आपको जॉब मिल गया. आपका महीने का सैलरी 80,000 है. तो आपका ब्रदर पढ़ रहा है. तो ब्रदर का फीस पे करना है एवरी मंथ 10,000. तो 80,000 में से आप 10,000 पे करेंगे. So if it is developing 100, it will give 40 to this. So remaining is my net work. Hope you have understood, my dear loving students. Have you understood? Say something, dear. हाँ या ना. Yes sir. So we have given to this. Absolutely fine. इसको बोलते हैं
open cycle gas turbine, because from the atmosphere air is entering and gases are going to atmosphere. Again the new cycle starts. What does new cycle mean? Air aega, from the atmosphere air enters, it is compressed, then fuel is injected, combustion is taking place, then burned gases enter turbine, develop power, gases go out, again air comes. So this cycle is repeated, but it is not closed. So therefore if I represent this on TS diagram, तो क्या होगा सर? 1 to 2 reversible adiabatic compression, देखो 1 to 2, and 2 to 3 constant pressure heat addition, okay sir, and 3 to 4 reversible adiabatic expansion, and then it is going. तो ये होगा आपका, it is open cycle, ये close नहीं है सर, atmosphere से आ रहा है, air is entering from atmosphere and gases are going to atmosphere. This is going on. If the same, if I want to represent on PV diagram, mitro, reversible adiabatic compression is 1 to 2, constant pressure heat addition is 2 to 3, 3 to 4 is reversible adiabatic expansion. देखो एक बार, 1 to 2 is reversible adiabatic compression, 2 to 3 is constant pressure heat addition, 3 to 4 is reversible adiabatic expansion, and it is going out. 4 to 1 कुछ भी नहीं है, so it is something like this. Therefore we call it as what cycle? Open cycle gas turbine. डेफिनेटली सर, अमित, डेफिनेटली स्टार्टिंग तो देना पड़ेगा सर, डेफिनेटली। देखो सर, सर स्टार्टिंग तो मुझे जॉब करना है तो एग्जाम तो लिखना है, एग्जाम लिखना है तो फी तो पे करना है, या वही देंगे? फी तो पे करना है सर, उसके बाद नौकरी मिलेगा, मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा, मिलते ही जाएगा, वैसा ही है ये। इनिशियली यू हैव टू गिव फ्रॉम योर पॉकेट, देयर इज नो ऑप्शन। इज इट ओके सर? ओके सर, ओके सर, सब लोग एक बार बोलो ओके सर, ओके सर बोलो। सी माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, एक बार देखना, आप इंजन को रन कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं सर आप? फॉर एग्जांपल छोटा सा एग्जाम बनाओ, किक मार रहे हैं आप, आपके सामने सब क्लैरिटी है सर, किक मार रहे हैं सर आप, क्या करेंगे? सो व्हेन यू आर प्रेसिंग दैट पेडल, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रिएटिंग सक्शन एंड कंप्रेशन, देन कंबशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मींस इनपुट यू हैव टू गिव फ्रॉम योर पॉकेट, तो कंप्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है सर? therefore there is initial input to be given, once that input compression start होके then burn होता है, तब स्टार्ट होगा सर। इज इट ओके? हाँ चलो, अब देखिए, ये होगा मेरा साइकिल, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस कहां से आएंगे सर? द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट आर फ्रॉम हियर, एक बार देखना। लेट अस टेक कंबशन चेंबर एज द कंट्रोल वॉल्यूम। देखो, मैं इसको कट करके आपको दिखा रहा हूं, ओनली दिस पोर्शन मित्रों, ओनली दिस पोर्शन, only this portion I'm cutting and showing it on the next slide. Will that be fine, sir? I'm just removing this and I want to analyze that portion of the power plant. Will that be okay? Will that be okay, sir? Yes. अब देखिए, देखो एक बार मित्रों, दिस इज द कंबशन चेंबर, यहां फ्यूल आ रहा है सर, हियर air is entering Ma, and here Ma plus Mf, which we call it as gases, and they are leaving at 3, ठीक है सर, entering at 2, okay fine, no problem at all. There is one term known as calorific value, which we write it as Cv. What does calorific value mean? When you burn 1 kg of fuel, whatever the energy the fuel is releasing, we call it as calorific value. So generally we express this in kilojoule per kg. For example, if the calorific value of the fuel is 35,000 kilojoule upon kg, what does it mean, sir? It means when 1 kg fuel is burnt, it will release 35,000 kilojoule of energy, heat energy. So if the calorific value is Cv kilojoule, what does it mean? If 1 kg is burnt, it will release these many kilojoule of heat. Hope you understood, sir. क्या ये बात सबको पहुंच गई, sir? Say something, dear. If you say yes, then I'll proceed.
Correct. Chalo. No problem at all. No problem at all. Absolutely fine. Chalo. Let us go for energy balance. When you go for energy balance, ध्यान से सुनो. Let the enthalpy of air at this point be H2. What does small h2 means? So many kilojoule per kg. 1 kg has these many kilojoule of energy. So what is the energy? Ab dekho, I'm writing the conservation of energy. I'm applying the conservation of energy to this control volume. So what do I get, my dear student? Idhar dekho. MA is coming. So what is the total energy? So 1 kg will release H2. MA will release MA plus H. MA into H2 has the energy. This is the energy entering. Plus, ये भी अंदर आ रहा है सर. 1 kg of fuel will release CV. MF will release MF into CV. This is the energy released by the fuel, and this is energy with which the air is entering. This is the total energy entering, and these are steady flow devices. What is the energy leaving? What is this? Is MaH2 is entering energy. MF into CV is the energy released by the fuel. This energy plus this energy should be equal to this energy. ये क्या होगा सर? Ma plus MF into, if the enthalpy here is H3, so therefore this is the balance. So ये बहुत important है. आपको एग्जामिनेशन में एयर फ्यूल रेशियो पूछ सकता है सर. सो हाउ कैन आई फाइंड एयर फ्यूल रेशियो? कुछ मत करना सर, दोनों तरफ MF से डिवाइड करना. तो सेम इक्वेशन लेट मी रीराइट. MaH2 plus MfCV is equal to Ma plus MF into H3. So you divide both sides with MF. देखो MF, MF, MF. So what do I get, sir? Here you have MA by MF, correct? तो इसको मैं लिखेगा MA by MF. Absolutely fine. Then MF by MF is 1. This goes out and you have only CV left. That should be equal to, इसको क्या लिखेंगे sir? MA by MF plus 1. MF by MF is 1. So therefore, this can be written as MA by MF, हाँ जी sir, MA by MF plus 1 into H3. So sometimes in examination, he may be asking mass of the mass of air to mass of fuel. So क्या ये equation सभी को समझ में आया सर? लेकिन you should take care of units. देखो, if this is given in kilojoule per kg, this should be in kilojoule per kg, this should be in kilojoule per kg. And you know the working fluid is gas, we can treat it as ideal gas. तो अब देखो सर, can you tell me what is H2? यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है सर? यहाँ पे तो एयर ही है सर, ये सिर्फ एयर है. तो यहाँ पे कौन सा? 3 is मतलब gases. At state 3 we have combustion products coming out. At 2 only air is coming. 2 का मतलब air. अब देखो, I will write this equation as Ma by Mf. For an ideal gas, you can write enthalpy as CPT. ये किसका CP लेना है? 2 का. 2 में क्या है? Air. तो CP of air into, this is at state to T2. H is CPT plus calorific value is equal to Ma by Mf into, sorry, into H3. What is H3? यहाँ पे gases है sir. CP of gases into T3. Absolutely fine. क्या ये equation सभी को समझ में आया? So keep temperatures in Kelvin because we are using ideal gas equation. So absolutely no problem at all. अब देखिए sir, T2, T3 will be given. CP of air, CP of gases are given. और एक बात है sir, if CP of gases and CP of air are not given, then you take both to be same. दोबारा बता रहा हूं, if the specific heat of gases is not mentioned separately, then you should take the specific heat of gases same as that of air, which is 1.005 kilojoule per kg per Kelvin. अब मुझे blame मत करना सर, CP of gases नहीं दिया है, क्या करना है? रोते मत बैठो, एयर का जो CP है वही लेके कर लेना. Will it be fine, sir? This is the fundamental equation and very important. Hope you understood. बहुत बढ़िया sir. अब देखिए sir. Shall I proceed? Now I'll go for analysis of the cycle. Analysis of the cycle. When I go to the analysis of the cycle,
We have to make anyone. When I go to the analysis of cycle, क्या करेंगे सर आप बताओ? I want to see कितने लोग आंसर देंगे? Excellent, excellent, excellent. First, देखो एक बार देखिए सर. Go to the line diagram. देखो एक बार. Compressor is one device. Condenser, sorry, I'm sorry. यहाँ पे condenser use करेंगे तो हंसेंगे लोग. Condenser is for phase change. यहाँ पे phase change नहीं हो रहा है, गैस है. तो if you use the word condenser, people will laugh. तो simply आपको heat exchanger बोलना है. ठीक है सर. यहाँ तक clarity आ गया सर. बहुत अच्छा clarity आ गया सर. Now, before I go to the analysis of the cycle, मेरे प्यारे बच्चों, before I go to the analysis of the cycle, let's go to the closed cycle gas turbine. Now, please observe. We have gas, say at state 1, then it is compressed. ध्यान से सुनो. Previously in open cycle gas turbine, we used, क्या use किए थे? Combustion chamber. Now I don't use combustion chamber, I use heat exchanger. What is the meaning of this? This is the heat exchanger. तो यहाँ पे क्या होता है ना, this gas will come, externally you supply heat. Somewhere the fuel is burning, लेकिन कंबशन चेंबर में, ओपन साइकिल गैस टर्बाइन में यहीं पे बर्निंग होता है. लेकिन हियर बर्निंग इज अकरिंग समवेयर, दैट व्हाटएवर द फ्यूल इज बर्न्ड, व्हाटएवर द हीट इज रिलीज्ड, दैट हीट इज ट्रांसफर्ड हियर. सो देन it is a constant pressure heat supply 2 to 3. Absolutely fine. Now the combustion chamber is replaced with what? The combustion chamber is replaced with heat exchanger. Excellent sir. Now we have a turbine 3 to 4. These gases are, यहाँ पे कोई combustion नहीं sir. Gas is coming, gas is compressed. Look at, gas is compressed, gas is absorbing heat outside. There is no direct contact between this and this. So simply gas क्या कर रहा है? Heat ले रहा है, और heated gas is coming out and entering the turbine. And then there is expansion 3 to 4. उसके बाद है यहाँ पे again there is a heat exchanger. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? It is rejecting heat. It is rejecting heat. So constant pressure heat rejection, and then this is the cycle 4 to 1. It is a closed cycle. लेकिन ये गलत है सर. Compressor should run with the help of turbine, and ये होगा आपका network. यहाँ मिल रहा है सर. This is a closed cycle gas turbine which I had already represented on PV and TS diagram. मित्रों इधर देखो, already this is on PV diagram 2 to 3 and 3 to 4. ये हमारा cycle हो गया सर. If the same thing is shown on TS, already I have explained isentropic compression, constant pressure heat addition, then isentropic expansion and constant pressure heat rejection. यहाँ पे supply हो रहा है, यहाँ पे reject हो रहा है सर. The same cycle I have shown. Is it clear, my dear students? This is clear. I'll proceed, sir. Let's go to the analysis of the cycle assumption first. मेरे प्यारे बच्चों इधर देखो. From the, देखो एक बार, if you understand carefully, this is compressor. If I take compressor as a control volume, if I take this heat exchanger as a control volume, if I take turbine as the control volume, and then this heat exchanger as a control volume, अब हो क्या रहा है एक बार देखो. देखो एक बार, देखो इस कंप्रेसर में फ्लूइड अंदर आ रहा है और फ्लूइड बाहर जा रहा है. हीट एक्सचेंजर में फ्लूइड अंदर आ रहा है, फ्लूइड बाहर जा रहा है. टरबाइन में फ्लूइड अंदर आ रहा है, फ्लूइड बाहर जा रहा है. हीट एक्सचेंजर फ्लूइड अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है. वेरी गुड सर. So every device is an open system because fluid is crossing the control volume. So each device is an open system. So the first assumption is
each device is treated as a steady flow device. Each device is treated as a steady flow device. Excellent, sir. Each device is treated as a steady flow device. Second, correct? Compression and expansion. कौन है रे? क्या बोल रहा है? एक सेकंड. एक सेकंड. एक सेकंड. कौन है रे? चलो. चलो स्टार्ट करते हैं. Shall we proceed? Okay, sir. No problem. I'm sorry for the disturbance. Okay. Compression and expansion are assumed to be reversible adiabatic. ठीक है. Third, kinetic energy and potential energy changes are neglected. Kinetic energy and potential changes are neglected. Fourth, working fluid, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, is treated as an ideal gas. The working fluid is treated as an ideal gas. And fifth one is specific heats are assumed to be constant. Specific heats are assumed to be constant. So whenever specific heats are constant, that ideal gas we call it as perfect gas. Sir समझ में नहीं आया. देखो, ideal gas is of two types. One is perfect gas, the other is semi-perfect gas. So what is perfect gas? It is ideal gas with constant specific heats. What is semi-perfect gas? It is ideal gas with variable specific heat. Actually speaking, my dear students, specific heat is a function of temperature. Temperature के साथ वो change होते हैं sir. With temperature they change.
रिपीट। नो मैं एक डिसाइड कर लिया सर। क्या डिसाइड कर लिया? अब यूट्यूब पे ज्यादा नहीं आना है। द रीजन बीइंग बिकॉज आपको फ्री का खाना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं सर। तो आई विल बी टेकिंग ऑन स्पेशल क्लास, क्योंकि अब जो भी है मैं स्पेशल क्लास पे पढ़ाऊंगा, अनअकैडमी ऐप पे पढ़ाऊंगा। फ्री क्लास है वो। एटलीस्ट वहां पे सिस्टमेटिकली आई कैन यूज वेरियस टूल्स एंड फिगर्स, तो अच्छा पढ़ा सकता हूँ सर। बिकॉज यू पीपल आर नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट, तो मुझे भी इंटरेस्ट जा रहा है सर। आई एम ऑल्सो लूजिंग इंटरेस्ट। आई एम ऑल्सो लूजिंग इंटरेस्ट सर। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे we assume the specific heats to be constant. Okay, these are एक बार I request everyone to go through assumptions. Go through the assumptions. देखो, specific heats are constant, working fluid is an ideal gas, kinetic potential changes are neglected, compression expansion are reversible adiabatic, each device is treated as a steady fluid device. These are the क्या बोलते हैं assumptions. अब देखते हैं, we'll start the analysis. Now देखो, analysis is very very important. ये कौन है रे? पता नहीं यार, कंटिन्यूअसली कौन कौन डिस्टर्ब कर रहा है मुझे? कौन है रे? कुछ भी मैसेजेस भेजते हैं सर। एक सेकंड। चलो, कोई बात नहीं। चलो, now we'll start the analysis. What is 1 to 2 processor? Same analysis. 1 to 2 is, it is occurring in compressor, so it is reversible adiabatic compression. So the fluid is entering the compressor at, अरे यार ये कौन है पागल? Entering at 1, then leaving at 2. This is 1 to 2 is occurring in compressor. So in compressor, you will be supplying the work. So there the work input is given to the fluid. Apply karo sir. H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus Q is equal to H2 plus C. भी सही है? नो आई थिंक करेक्ट ना? पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ था नेट का। इट सीम्स देयर वाज अ प्रॉब्लम। ओके, नाउ ओके ना? Okay, let's apply. The kinetic potential energy changes are neglected. देखो एक बार, this is reversible adiabatic. तो adiabatic means heat transfer is zero. तो H1 is equal to H2 plus W. So therefore, H1 minus H2 is equal to W. और W is equal to H1 minus H2, और W is equal to minus को कॉमन ले लेना, H2 minus H1. So negative इधर ले लेना, minus W is equal to H2 minus H1. What does negative work mean? This is work input. This work input is H2 minus H1. Is it correct? Now, my dear students, can I use enthalpy as CPT? Here, the working fluid is an ideal gas. Yesterday in Rankine cycle, it was not an ideal gas. So, whenever it is an ideal gas, I can use enthalpy as CPT. So, therefore, the work input to the compressor, WC लिखेंगे. C stands for, this is work input to the compressor, or WC. It is, my dear students, देखो, this is H2 is CP2, H1 is CP1. This is Cp into T2 minus T1. This is the equation of work input. Is it correct? बात समझ में आ गया सर? Yes, absolutely correct. Correct? Yes. So 1 to 2 analysis is over. Now I'll go to 2 to 3.
What is 2 to 3, sir? Already you know, constant pressure heat supply. अप्लाई करो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. H2 now it is from 2 to 3. एक बार देखो, देखिए एक बार. The fluid is entering at 2 and the fluid is leaving at 3 and there is a heat supply. Excellent, sir. It may be heat exchanger. So now let us apply the equation between 2 and 3. कहाँ रे? देखो, H2 plus C2 square by 2 plus Z2G plus Q is equal to H3 plus C3 square by 2 plus Z3G plus W. This is the equation. Absolutely fine. No problem at all. देखो, देखो. Now, kinetic energy and potential energies are neglected. So 2 to 3, there is a heat transfer. आप बताइए. So when it is a heat exchanger, what is the work transfer? Simply there is a heat transfer. We are supplying heat. So therefore work transfer is 0. So therefore now H2 plus Q is equal to H3, or Q will be equal to H3 minus H2, or this can also be written as heat supply is equal to Cp into H3. H3 को CpT3 लिखेंगे and H2 को CpT2 लिखेंगे. Cp को बाहर ले लेना, T3 minus T2. Absolutely fine. Cp into, so the heat supply is given by Cp into T3 minus T2. Absolutely fine. There is no problem at all. So compression is देखो, compression work is CpT2 minus T1, then and the heat supply is CpT3 minus T2. Next, now I'll go for 3 to 4. What is 3 to 4, sir? 3 to 4, reversible adiabatic expansion. Where is this process occurring, sir? This process is occurring in turbine. Correct na? This process is occurring in turbine. Ab dekho. Now this is the turbine, sir. The fluid is entering at 3 and the fluid is leaving at 4 and this is turbine. अब आप बोलो सर, तो अप्लाई करो 3 to 4. H3 plus C3 square by 2 plus Z3G plus Q. पूरा खेल मैं बता रहा हूं ना पावर प्लांट में, सिर्फ एक ही इक्वेशन, दैट इज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. वी हैव सीन इन RAC steady flow energy equation. We have seen Rankine cycle, steady flow energy equation. We are seeing Brayton cycle, steady flow energy equation. So this steady flow energy equation is very, very important equation, sir. Okay. H3 plus C3 square by 2 plus Z3G plus Q is equal to H4 plus C4 square by 2 plus Z4G plus W. Absolutely fine. So we remove kinetic potential energy changes. Okay. Now in turbine you are getting work, it is reversible adiabatic, so heat transfer को zero कर देना. So H3 is equal to H4 plus W. So W is equal to H3 minus H4. So therefore this is the turbine work. ये तो positive work है sir. Therefore H3 minus H4. So this turbine work can be written as Cp into T3 minus T4. H3 is CpT3, H4 is CpT4. This is the turbine work. कुछ observation मिल रहा है? So if you see, the observation is today is the last class of our applied thermodynamics का question series. I'll come later. मतलब ये theory होने के बाद. Will it be okay, sir? ठीक है, ये theory पहले पढ़ लेना. Then I'll come with question series. Questions either it will be on YouTube or special class. Okay? Okay? Right. अब देखो CpT3 minus T4 ये हो गया सर. देन वी हैव क्या ऑब्जर्वेशन है सर? मैं आपको एक बात बता रहा हूं. आई एम टेलिंग यू वन थिंग. देखो, if it is the compressor work, CpT2 minus T1. If it is a heat supply, CpT3 minus T2. If it is a turbine work, CpT3 minus T4. इसका मतलब ये हुआ, when you are seeing each device, everything is in terms of I'll cover. Don't worry. अभी थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले रहा हूं. तो देखो, बिल्कुल आई विल कवर एवरीथिंग. इट्स क्योंकि आपको भी थोड़ा पता चलना चाहिए. या देखो, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर्स. समझ में आ रहा है सर? आप इधर देखो, एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. देखो,
the compressor work Cp T2 T1, Cp तो constant है, T1 T2, then heat supply T3 T2, then turbine T3 T4 will take 4 to 1. What is 4 to 1, sir? It is constant pressure heat rejection. Constant pressure heat rejection. Okay. The fluid is entering at 4 and the fluid is leaving at 1 and there is a heat rejection. Apply karo. Now I have to apply from 4 to 1. So it will be H4 plus C4 square by 2 plus Z4G plus Q is equal to H1 plus C1 square by 2 plus Z1G plus W. Absolutely fine. So what are you doing? Kinetic. Potential energy changes to gap and this is heat rejection. It is a heat exchanger. In a heat exchanger, what is the work transfer, sir? In a heat exchanger, what is the work transfer? 0. So therefore, now H4 plus Q is equal to H1. So H1 will be equal, Q will be equal to H1 minus H4, or Q is equal to minus of H4 minus H1. So minus को इधर लेना. Negative heat is equal to H4 minus H1. So minus Q is nothing but Q rejection. So negative heat is Q rejection. H4 is CpT4, H1 is CpT1. So Cp into T4 minus T1. So no problem. Even if you write small or big, मैं तो units के साथ consistently रहता हूँ. So therefore heat rejection is CpT4 minus T1. So what is your observation, sir? मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत ही सिंपल है सर. माय ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिंपल. सो इन गैस टर्बाइन मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं सर. हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन गैस टर्बाइन्स. गैस टर्बाइन्स में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज यू फाइंड वेरियस टेम्परेचर्स. वंस यू कैलकुलेट ऑल टेम्परेचर्स, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर. वंस यू फाइंड ऑल टेम्परेचर्स, द प्रॉब्लम इज सॉल्व. इसीलिए अब देखो, what is compression work? Cp into T2 minus T1. What is heat supply? Cp into T3 minus T2. जो already I have direct वही लिख रहा हूँ. Then what is work of turbine? Expansion 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 ना. Cp T3 minus T4. And what is the heat rejection, sir? Rejection is taking place from 4 to 1. So Cp into T4 minus T1. Is it correct, sir? गलत है सर. एक बार देखो, सारे देख लेना एक बार. Rejection is Cp T4 minus T1. Correct. Then turbine is Cp T3 minus T4. And supply is Cp T3 minus T2. Cp T3 minus T2. And compression is Cp T2 minus T1. Yes. These are the things. Now we are ready. Every power producing cycle, the final aim is efficiency. What is efficiency, sir? Efficiency is net work by heat supply, or this can be written as efficiencies. What is net work, sir? Net work is turbine work minus compressor work by heat supply. This is correct, sir. बिल्कुल सही है, sir. Agreed or not? Yes. एक दूसरा तरीका क्या है, sir? Efficiency is what is, whether you put this or this, you will get the same answer. ठीक है, no problem at all. What is network? Network can be written as in a cycle. In a cycle, network is also equal to net heat. I repeat, sir. एक cycle में net heat और network same होता है. So therefore, net heat को लिखेंगे heat supply minus heat rejection by heat supply. So the efficiency is given by QS by QS is 1 minus QR by QS. Absolutely fine. Is it clear, sir? So therefore, the efficiency is given by 1 minus what is QR? QR Cp T4 minus T1. And what is QS? QS supply Cp
T3 minus T2. I repeat, sir, 1 minus heat rejection is what is heat rejection? CPT4 minus T1 and heat supply is CPT3 minus T2. तो ये कट जाएगा सर. So therefore efficiency is equal to 1 minus T4 minus T1 by T3 minus T2. Absolutely fine. ये हमारा इक्वेशन होगा. लेकिन आई एम नॉट हैप्पी विद दिस इक्वेशन सर. Why I am not happy? मतलब इतना बड़ा इक्वेशन कौन देते रे? T4 minus T1. समझ गए ना? तो इसको लेके हम आगे बढ़ेंगे. सो टू दिस, इफ दिस इज क्लियर, आई प्रोसीड सर. अगर यहां तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. वेरी गुड सर. देखो, लेट अस टेक 1 to 2 प्रोसेस. What is 1 to 2? Reverse. So now I am giving you technique of finding various temperatures. In the examination, he will not give various temperatures. He may be giving you 1 or 2 temperatures and you have to calculate other temperatures. Because if you want to find the efficiency or heat supply or work transfers, I need temperatures. Temperatures are must. Without temperatures, हम कर ही नहीं सकते सर. ठीक है सर. अब देखो कैसे करना है. इधर देखो 1 to, एक बार साइकिल ले लो सर. 1 to 2 is reversible adiabatic compression, 2 to 3 is heat supply, and 3 to 4 is expansion, and 4 to 1 is rejection. ठीक है सर. अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 1 to 2 is रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो क्या लिख सकते सर? देखो एक बार, यू नो वेरी वेल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए आई कैन राइट ऑलरेडी इट इज एन आइडियल गैस. क्या हम ऐसा लिख सकते सर? T2 by T1 is equal to P2 by P1 power gamma minus 1 by gamma. लिख सकते सर? With your permission, can I write this equation? Why? बताओ. To apply this particular equation, three conditions are required. First, the process must be reversible. Second, it should be adiabatic. And third, it should be, the working fluid should be ideal gas. So three conditions are required, sir. Otherwise, I cannot apply this equation. The working fluid should be ideal gas. Already it is an ideal gas. And the process should be reversible. And the process should be adiabatic. It should be reversible, adiabatic, and reversible, adiabatic, and ideal gas. Already working fluid is ideal gas and the process is reversible adiabatic. तो अप्लाई कर सकते हैं. तो इसके अलावा और क्या अप्लाई कर सकते हैं सर? ये भी अप्लाई कर सकते हैं सर. बिकॉज 1 to 2 है. P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा. इसके साथ साथ और एक भी अप्लाई कर सकते हैं सर. T1 V1 गामा माइनस 1 इज T2 V2 गामा माइनस 1. लेकिन अभी ये दोनों की मुझे जरूरी नहीं है तो मैं इस अप्लाई कर सकते हैं सर. बट देयर इज नो नीड हियर. आई एम राइटिंग नाउ. यू आर कंप्रेसिंग फ्रॉम, देखो एक बार, can I write this pressure as P1 and P4? Because at points 1 and 4, it is a horizontal line, so pressure is same. Absolutely fine. No problem at all. देखो, P2, P3, same pressure. P1, P4, same pressure. Very good, sir. Now I'll write, there is one term known as pressure ratio. इसको हम RP लिखेंगे. Before compression to the after compression, matlab minimum pressure to the maximum pressure, we call it as pressure ratio. Can I write it as P2 by P1 sir, RP ko? But P2 is also equal to P3. हाँ, but P1 is also equal to P4. Yes, this is the pressure ratio, sir. This is the pressure ratio. Pressure ratio RP can be written as P2 by P1 or P3 by P4. Absolutely fine. Now let's proceed, sir. देखो, so can I write this as T2 by T1 is equal to 1 to 2. What is P2 by P1? RP power gamma minus 1 by gamma.
This is very, very important relationship, sir. This is very, very important, my dear students. This is very, very important, मित्रों, in your gas turbines. ये बहुत important equation है सर, इसको थोड़ा याद रख लेना. T2 by T1 is equal to temperature after compression, temperature before compression is pressure ratio gamma. For air, gamma is 1.4. Is it okay? It's yes. Now I'll go for 2 to 3 process. What is 2 to 3, sir? 2 to 3 is constant pressure process. So when pressure is constant, ये तो adiabatic के लिए ये apply नहीं होगा सर. So एक बार what equations can I apply? Let's see. You know that the working fluid is an ideal gas. PV is equal to MRT. ठीक है सर. Steady flow तो mass तो constant है. R is already constant. For 2 to 3 pressure is constant. तो volume is directly proportional to temperature. तो कैसे करेंगे सर? एक बार देखना. V2 by V3 is equal to 2 to 3. V is proportional to T. So V2 by V3 is T2 by T3. Is this correct, sir? V2 by V3 is T2 by T3. Correct, na? Correct. Volume V2 by V3. V2 by V3 is T2 by. Absolutely fine. Now let's go to 2 to 3, 3 to 4. What is 3 to 4? It is reversible adiabatic. 3 to 4 is reversible adiabatic. क्या लिख सकते सर? इधर देखो. So reversible adiabatic, जैसे 1 to 2 है, 3 to 4 is reversible adiabatic. Already the working fluid is an ideal gas. तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर? जैसे 1 to 2 है reversible adiabatic, तो P3 by T4 is equal to P3 by P4 power gamma minus 1 by gamma. Correct, sir? Because it is reversible adiabatic. Absolutely. But what is P3 by P4? It is RP, pressure ratio. So P3 by T4, P3 by P4. P3 by P4 is RP. ये भी एक इक्वेशन बन गया सर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर. What is your observation based on this equation and this equation? If you see the right hand side is same. When the right hand side is same, left hand side should be same. तो क्या मैं लिख सकता हूं सर? T2 upon T1, T2 upon T1 is equal to T3 upon T4 is equal to T2 by T1 is equal to T3 by T4 is equal to right side RP power gamma minus 1 by gamma. Absolutely fine. This is a very, very, very important relationship in gas turbines. तो इसको ऐसे भी याद कर सकते सर. You multiply these two, you multiply these two. So we can write T1 T3, T1 into T3 is equal to T2 into T4, and all temperatures are strictly in Kelvin because we use ideal gas equation. In ideal gas equation, temperatures are strictly in Kelvin. Please, it's a humble request to all of you. If temperatures are given in centigrade, the first and foremost thing is you convert them into Kelvin. ठीक है sir. Now, so can I write this as product का मतलब multiplication? Odd temperatures, 1 3 is odd, 2 4 is even. Product of odd temperatures is equal to product of even temperatures. ऐसा याद रख लेना सर. गैस टर्बाइंस में ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर. यस, यस और नो? ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया. यस, ओके, नो प्रॉब्लम. हो गया सर? यस.
प्रेशर रेशियो का मतलब क्या है? इट इज, देखो, जनरली वी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कंप्रेशन के बाद डेफिनेटली प्रेशर बढ़ता है, सो इसलिए हाइयर बाय लोअर। ओके, अगर आपको प्रेशर रेशियो में लेस देन 1 दिया, इसका मतलब क्या है? उल्टा है, बट ऐसा एक्सप्रेस नहीं करते हम। तो दिस इज क्लियर सर? यस। नाउ कम बैक टू द ओल्ड इक्वेशन। एक बार ओल्ड इक्वेशन देख लेना मित्रों, एक बार ओल्ड इक्वेशन देखना। वी हैव द इक्वेशन ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ब्रेटन साइकिल एज 1 माइनस T4 माइनस T1 बाई T3 माइनस T4। ये इक्वेशन आया था, इसको उठा लेंगे सर हम। We'll take this equation. The equation of efficiency is given by 1 minus T4 minus T1 by T3 minus T2। ठीक है। Now देखिए सर, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं सर? T1 को बाहर ले लेना, तो T4 बाई T1 माइनस 1। T1 को बाहर ले लेना, T2 को बाहर ले लेना। करेक्ट। तो अब देखो, प्रोडक्ट ऑफ ऑड टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इवन टेम्परेचर। T1 T3 इज इक्वल टू T2 T4। ठीक है सर, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? T4 बाई T1, T4 बाई T1 इज T3 बाई T2। यस सर। T4 by T1 is T3 by T2। ध्यान से सुनिए, T4 by T1 is T3 by T2। This minus 1, this. Can I say this and this is same? Yes, you can cancel. So simple form में efficiency is 1 minus T1 by T2. Absolutely fine. Can you tell me what is T1? It is, all temperature should be strictly in Kelvin. This is temperature before compression. This is temperature before compression. ठीक है। And what is T2? It is the temperature after compression. ठीक है सर, it is the temperature after compression. Absolutely fine. तो already you have seen T2 by T1 is equal to, देखो somewhere T2 by, what is T2 by T1 sir? Rp power gamma minus 1 by gamma. So therefore T2 by T1 is Rp power gamma minus 1 by gamma. So the efficiency is given by 1 minus, what is T1 by T2? T1 by T2, ulta, T1 by T2, ulta. So it is 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. And I request everyone to remember this particular equation. अभी सबको समझ में आया सर? बोलो बाबा। Final equation. This is the final equation. So I'll tell you what are the things that you need to remember in a simple gas turbine Brayton cycle. मैं बताता हूँ क्या याद रखना है। बहुत सिंपल है सर, कुछ नहीं है। You draw gas turbine cycle either on PV or on TS. Correct. Correct, sir. Compression, heat supply, rejection. Yes. Yes, इधर compression, constant pressure heat supply, then isentropic expansion, then ये हो गया सर आपका साइकिल। अब देखो क्या याद रखना है सर, क्या 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 याद रखना है? So everything I'll write very clearly. The compression work is Cp into T2 minus T1. अरे यार ये क्या हो रहा है? Okay, then heat supply will be equal to Cp into T3 minus T2. Then turbine work is equal to Cp into T3 minus T4. ठीक है सर।
turbine is 3 minus 4, and the heat rejection, अरे यार, heat rejection is equal to Cp into T4 minus T1. That's it. याद रहेगा सर ये? Compression is 2 minus 1, then supply is 3 minus 2, then expansion is 3 minus 4, then rejection is 4 minus 1. ठीक है sir. What is the efficiency? And one more thing, product of odd temperatures is product of even temperatures. ठीक है sir, this is also correct. Then finally the efficiency is given by 1 minus T1 by T2, correct? Correct now? 1 minus T1 by T2. Then this can also be written as 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. That's it, sir. Clear? Complete एक ही इसमें. Agreed? Yes. Now, let's analyze further. My dear students, if you observe, the efficiency of a Brayton cycle or gas turbine cycle is 1 minus 1 by Rp power gamma minus 1 by gamma. Gamma is more or less constant. So the efficiency can be written as a function of pressure ratio. Agreed, sir? Efficiency is a function of pressure ratio. Agreed? Agreed. Now, let's see, my dear students. Have a look at this. Let us see. एक बार देखो. Suppose I plot efficiency versus, देखो, pressure ratio versus efficiency. ठीक है, sir. Now, what is your observation? The observation is, if the pressure ratio is 1, अरे यार, अगर pressure ratio 1 है, 1 power something is 1, 1 minus 1 is 1, 1 minus 1 is 0. If the pressure ratio is 1, pressure ratio is 0, pressure ratio is 1, pressure ratio is 2, 3, 4, 5, so on so forth. अब बढ़ रहा है सर, देखो. If the pressure ratio is 1, 1 power something is 1, 1 by 1 is 1, 1 minus 1 is 0, so efficiency is 0. ये efficiency coordinate है sir. Efficiency is 0 means this line. When the pressure ratio is 1, the efficiency is 0. This is my starting point. So what is the physical meaning of this? Very simple, sir. What does pressure ratio 1 mean? फिजिकली इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे. व्हाट डज प्रेशर रेशियो 1 का मतलब? प्रेशर रेशियो 1 मींस बिफोर कंप्रेशन एंड आफ्टर कंप्रेशन द प्रेशर्स आर सेम. मतलब कोई कंप्रेशन नहीं है. जब कोई कंप्रेशन नहीं, कोई पावर ही नहीं मिलेगा, इसलिए एफिशिएंसी 0 है. ठीक है सर. नाउ नेक्स्ट, यू जस्ट ऑब्जर्व, इफ आरपी इज इंक्रीजिंग, ध्यान से सुनो, इफ आरपी इज इंक्रीजिंग, ये वैल्यू पावर समथिंग, ये तो कांस्टेंट है, जब ये वैल्यू बढ़ रहा है तो ये वैल्यू बढ़ेगा. डिनोमिनेटर जब बढ़ रहा है, दिस डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटेगा. दिस विल डिक्रीज, दिस विल डिक्रीज. when this is increasing, when the pressure ratio is increasing, power is there, so this will increase. When the denominator is increasing, this total value will decrease. Negative decrease means this value will increase. So when the pressure ratio is increasing, the efficiency is also increasing. So therefore, you will have a graph something like this. You have a graph something like this. So you may be wondering, sir, how can it be like this? So if you differentiate this with respect to RP, you will get a decreasing slope. Therefore, it is a positive decreasing slope. ये सब मैं maths में पढ़ाया था, slopes कैसे होता है क्या नहीं. So therefore, this is the plot. Is it okay, sir? सॉम में भी पढ़ाया था. ट्रू. Agreed? If you agree, I'll proceed, sir. So यहां तक कोई टेंशन की बात नहीं है. तो one thing we have observed is the pressure ratio is higher. The pressure ratio higher is the efficiency. Let's see physically what is the meaning of this. When you are increasing the pressure, मतलब जब pressure ratio बढ़ा रहा है, ज्यादा compress कर रहा है. That is the meaning ना. When you are increasing the pressure ratio means compressing more. प्रेशर बढ़ा रहे का मतलब ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं. जब आप ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं तो ज्यादा एक्सपेंशन का भी स्कोप होता है ना सर. When you are compressing more, the scope for expansion is also more. So when the scope for expansion is more, the turbine work will be more.
So for a given heat supply, as the work is more, network is more, the efficiency will increase. जब ज्यादा compress करेंगे तो ज्यादा expand होगा, तो ज्यादा work मिलेगा, so efficiency बढ़ेगा. That is the logic here. Is it okay? Clear? Yes. Now, थोड़ा मेरा greediness बढ़ गया सर. My greediness has increased. So now I want to increase the efficiency. I want to increase the efficiency. मेरा greediness बढ़ गया. मेरा greediness बढ़ गया, तो I am increasing the pressure ratio like anything. मैं pressure बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ. अब देखिए सर, देखो एक सेकंड, देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखना. This is 1, this is 2, and this is 3, and this is 4. Okay, sir. अरे यार, कार्ड उठाएंगे. Now I want to tell some golden points. ये बहुत बहुत important है सर. What is the maximum temperature in the cycle? What is the maximum temperature in the cycle, which is at the turbine inlet T3? What is the minimum temperature of the cycle? It is T1, which is the lower temperature, that is entry to the compressor. ये compressor का entry है 1, ये turbine का entry है. देखो, I will write this as T1 and I will write this as T3. ठीक है सर, इसको मैं T1 लिखूंगा, इसको मैं T3 लिखूंगा. देखो, let this pressure be P1 and you know very well whether it is P1 or P2, ये तो constant pressure line है. This P1 P4 is same. Now let this pressure be P2, so P2, or I can also write it as P3. So okay, no problem at all. You tell me what is the pressure ratio. The pressure ratio is P2 by P1. So compared to this pressure is more. Compared to this pressure is more. ऊपर जा रहा है तो pressure is increasing. Now what I do is I want to increase the efficiency. तो क्या करेंगे सर? If I want to increase the efficiency, क्या करेंगे? Just now you have seen, my dear students, if I want, देखो एक बार, if the pressure ratio is 2, this is the efficiency. If the pressure ratio is 4, this is the efficiency. So as the pressure ratio is increasing, efficiency is also increasing. Absolutely fine. अब देखो सर, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखना. Now, so I want to increase the efficiency. So this is one cycle. So let the efficiency of this cycle 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Let its efficiency be some neta 1. So इसको हम लिखेंगे cycle 1. This is cycle 1. Okay, the efficiency is this. Now I'll go to another cycle wherein I have increased the pressure ratio. इधर देखो सर, अब हम क्या कर रहे हैं सर? Have increased the pressure ratio. Instead of compressing from 1 to 2, I compress a bit more, then I'm supplying it. याद रखना सर, every material can sustain the maximum temperature up to certain limit. Beyond that it cannot sustain. उसके बाद वो sustain करेगा ही नहीं. Beyond that it cannot sustain. So higher temperature is limited based on metallurgical conditions. This higher temperature, this T3 is fixed. I cannot cross this T3. If I cross that T3, it will enter at higher temperature. It will enter the turbine blades at high temperature. Thereby, the blades may get damaged. So, इसीलिए there is a metallurgical limit. Generally, the maximum temperature in gas turbines is about 1700 Kelvin. It is in Kelvin.
So I cannot cross that temperature. If I cross that temperature, if I cross that, अरे P1 cannot decrease because P1 is atmospheric. Atmospheric तो limited है ना मिस्टर जगदीश. हाँ आपने लॉजिकली सही बोला, but atmospheric pressure is limited ना. Agreed? How can I reduce? समझ गए जगदीश बाबू? बाबू जगदीश, आप तो कल परसों तो नहीं आए. यू आर क्वाइट रेगुलरली इरेगुलर नाउ. अब देखो, देखिए सर, नाउ 1 to 2 is compression. देखो 1 to 2 dash. Now we are supplying it. देखो supplying it, supplying it, supplying it, supplying it, supplying it, supplying it. I stopped here only. Why have you stopped here? Because if I supply further, the temperature will increase. At higher temperature, if it enters the turbine, it will damage. So I have to stop here only. Then it is expansion. Now there is a new cycle. What is that new cycle? 1, 1, 2 dash, 3 dash, 4 dash. Let us say this is a second cycle. Let the efficiency of this cycle be neta 2. You know, my dear students, this pressure, let me write it as P2 dash. What is the new pressure ratio? Old pressure ratio was P2 by P1. Now the new pressure ratio is P2 dash by P1. So which pressure ratio is more for cycle 2 or cycle 1? Cycle 2. So can I say efficiency of 2 is greater than efficiency of 1? Because higher the pressure ratio, higher is the efficiency. Is it clear, my dear students? हाँ जी सर. अब देखो, नाउ नेक्स्ट आई फर्दर इंक्रीज. मित्रों और बढ़ाएंगे. इधर देखो सर, I cannot cross this. This is my third cycle. The third cycle is 1, 2 double dash, 3 double dash, 4 double dash. This is the third cycle. So therefore, definitely the pressure ratio of third is more. So therefore, its efficiency will be greater. Hope you understood, sir. So because pressure ratio बढ़ते जा रहा है, तो efficiency is also increasing. यहाँ तक समझ में आया sir. But have you observed one thing? Even though the efficiencies are more, but the closed area is decreasing. Agreed, sir? Even though the efficiency is more, but the closed area started decreasing. What does closed area mean? Closed area on a TS diagram is net heat. But from first law of thermodynamics, net heat is also equal to net work. Iska matlab, if you are increasing the pressure ratio, the net work is decreasing. You may be wondering, sir, efficiency is net work by heat supply. So when network is decreasing, so originally the network was more. But if I increased the pressure ratio, the closed area is decreasing. When network is decreasing, efficiency should decrease na? Nah. When network is decreasing, यहाँ पे देखो, you were supplying this much amount of heat. Now you are supplying only this much amount of heat, only this much amount of heat. That's why, my dear students, heat supply is decreasing. So network is also decreasing, but the total actually the efficiency is increasing because the effect of this heat rejection is less compared to the effect of this. Therefore, ध्यान से सुनो सर, दोबारा बता रहा हूं, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इसका जो डिक्रीज है ना वो कम है कंपेयर टू द डिक्रीज ऑफ दिस. दैट्स व्हाई द एफिशिएंसी इज इंक्रीजिंग. बट समझ में आ रहा है सर? यस. अब देखो, तो should I go for higher efficiency? No, I am asking conceptual question. क्या मैं हायर एफिशिएंसी की तरफ जाऊं? यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर. इफ आई गो टुवर्ड्स हायर एफिशिएंसी,
my net work is decreasing. So you may be getting higher efficiency, but you are getting only less power. Network command. It's something like this. I'm developing power, high efficiency, but only 1 kilowatt power. Have you understood this? I'm developing power at higher efficiency, but only 1 kilowatt. मतलब एक बल्ब जलने के लिए मैं डेवलप कर रहा हूँ. क्या आप एक्सेप्ट करेंगे सर? नहीं. So higher efficiency is not always desirable. So okay, higher efficiency एक एक बार क्या होता है ना, धोखा भी देता है सर. It may come in limited quantity. तो आपको क्या करना है पता है सर? एक ऐसा प्रेशर रेशियो फाइंड आउट करो. यू फाइंड वन सच प्रेशर रेशियो वेयर द वर्क आउटपुट इज मैक्सिमम. एंड दैट देखो एक्चुअली हो क्या रहा है पता है सर? ओरिजिनल देखो, आप फिगर देखते जाना. ओरिजिनली व्हाइट वाले का क्लोज एरिया से कंपैरिजन में मुझे ग्रीन वाले का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है सर. दोबारा बता रहा हूं, दिखा रहे यहाँ पे. अब सच है या हकीकत है या नहीं, वी डोंट नो. कंपेयर टू दिस व्हाइट एरिया, ग्रीन एरिया थोड़ा ज्यादा दिखा. मींस व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द प्रेशर रेशियो, वर्क बढ़ रहा है. बट अगेन इफ आई फर्दर इंक्रीज द प्रेशर रेशियो, और घट रहा है. इसका मतलब द वर्क विथ इंक्रीज इन प्रेशर रेशियो, द वर्क इज इंक्रीजिंग, अगेन इट इज डिक्रीजिंग. मींस at some point of time, at some pressure ratio, the work is maximum. So that pressure ratio where the work is maximum, we call it as optimum pressure ratio. अभी वो फाइंड आउट करेंगे. क्या आप देखो एक बार, मैं आपको आपको विजुअलाइजेशन दिखाता हूं सब. आई विल शो यू क्लियरली. मित्रों मैं आपको दिखाता हूं सर. मित्रों अब देखो, ठीक है सर, ये एक होगा. विच वन इज फिक्स्ड सर? आई कैनॉट चेंज दिस. आराम से, टेंशन नहीं लेने का. क्या नहीं लेने का? टेंशन नहीं लेने का. चलो what is your observation? My observation is something like this. पूर्ण मास देखो, let this be 1, let this be 2, let this be 3. एक बार देखो सर, ग्रीन वाले साइकिल का एरिया ठीक है, मुझे ना व्हाइट वाले का थोड़ा ज्यादा दिख रहा है सर. मींस व्हेन आई एम इंक्रीजिंग प्रेशर, द वर्क इज इंक्रीजिंग, बट इफ आई फर्दर इंक्रीज, वर्क डिक्रीज हो रहा है. मींस ओरिजिनली वर्क बढ़ रहा है, मे बी रीचिंग मैक्सिमम, देन इट इज डिक्रीजिंग. अग्रीड सर?
the pressure ratio at which the work is maximum is known as optimum pressure ratio. Is it okay? Great. Let's take a break of, okay? Chalo.
चलिए रेडी आ गए? चलो आ गए? आ गए सब लोग? बहुत बढ़िया, वंडरफुल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। होप यू अंडरस्टूड। देखो, यू नो, कभी भी याद रखना, वेन आ गए सब लोग? ऑलवेज रिमेंबर, whenever I say cycle, when I say work, it's not simply turbine work or compressor work, it is always network. We are always interested in net work is always the useful work. मतलब कंप्रेशन में थोड़ा जेब से जा रहा है, टरबाइन से आउटपुट थोड़ा मिल रहा है, द डिफरेंस इज व्हाट आई कैन यूटिलाइज. सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन आई से साइकिल, इट इज द नेटवर्क. चलो, network can be written as the turbine work minus compressor work. So the network is given by turbine work. What is turbine work? Cp into T3. Turbine work is, sorry, galat. Is the turbine work correct? Correct. Minus compressor. देखो सर, if you understand, if you follow the cycle properly, देखो, which one is the maximum temperature? मित्रों, which one is the maximum temperature? T3. And this is the minimum temperature. Okay. So can I increase the maximum temperature further? It is fixed, sir. I cannot change. It is fixed. वो तो फिक्स है सर. I cannot, due to metallurgical limitations, I repeat, due to metallurgical limitations, my T3 is fixed. I cannot change. And what is T1? Atmospheric, lower temperature. I cannot change. वो तो लगभग constant ही है. Maybe 20, 30 जो भी है, it is almost constant. So T1, T3 are fixed. The maximum and minimum temperatures are fixed. इधर देखो. So I write here, what is the maximum temperature? T3. And what is the minimum temperature? T1. The maximum and minimum temperatures are fixed. Absolutely fine, sir. Maximum minimum temperatures are fixed. Maximum minimum temperatures are fixed. So what are the variables now? The variables are T2 and T4. Whenever you want something maximum or minimum, क्या करते हैं सर? मुझे ना ये नेटवर्क ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो का मतलब क्या है सर? इट इज सच अ प्रेशर रेशियो वेयर द नेटवर्क इज मैक्सिमम. आई वांट दिस वर्क टू बी मैक्सिमम. सो इस मैक्सिमम वर्क पे जो भी प्रेशर रेशियो आता है, उस प्रेशर रेशियो को वी कॉल इट एज ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो. अब हमारा काम क्या है ना? नाउ आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट दैट प्रेशर रेशियो.
So how can I find the maximum work? So whenever you want something maximum or minimum, you differentiate with variable and equate it to 0. But unfortunately, here, of course, T3, T1 are fixed. CP तो anyway constant है. T2, T4 are variables. दो variables है सर. कैसे करेंगे सर? एक वेरिएबल है तो इजीली यू कैन डिफरेंशिएट एंड इक्वेट इट टू 0. बट यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, कैसे करेंगे सर? आप आइडिया दो मुझे. You please give me some idea. I want some inputs from you. यस, 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 एक्सलेंट. मेरे पास और एक इक्वेशन है सर. द प्रोडक्ट ऑफ ऑड टेम्परेचर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इवन टेम्परेचर्स. The product of odd temperatures is equal to product of even temperatures. Absolutely fine. अब देखो, can I write T4 as T1 T3 by T2? Can I write T4 as T1 T3 by T2? Yes. So therefore, the net work is given by CP T3 T4. What is T4, sir? T1 T3 by T2 minus CP into T2 minus T1. Very good, sir. So this can be written as CP को पूरा बाहर ले लो, यहां से CP. So it will be T3 minus T1 T3 by, correct, by T2 minus T2. ये minus of minus ये हो जाएगा. This will be plus T1. Any problem, sir? Is there any problem, sir? Let me repeat, sir. CP T3 minus T1 T3 by T2 minus T2 minus, yes, correct. What is our variable now? So already the highest and lowest temperatures are fixed. So T1, T3 are fixed. The only variable is T2. Now you differentiate this with variable and equate it to 0. So I write for maximum network, differentiate this with respect to T2 and equate it to 0. ठीक है, ये वाला इक्वेशन उठा लीजिए सर. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो W net is equal to CP T3 minus T1 T3 by T2 minus T2 plus T1. Okay, so now you differentiate. CP is constant, the maximum temperature is constant, differentiation of constant is 0. T1 T3 is also constant. What is the differentiation of 1 by T2? 1 by T2 is T2 power minus 1. तो इसको differentiate करो. N into x power n minus 1. So it will be minus 1 by T2 square. Absolutely fine. तो ये इसका differentiation होगा minus 1 by T2 square minus differentiation of T2 is 1. T1 is constant. ये तो 0 होगा. And this should be equal to 0. तो क्या मिलेगा सर? CP into minus of minus plus T1 T3 by T2 square minus 1 is equal to 0. Correct. This cannot be 0. So T1 T3 by T2 square minus 1 is equal to 0, or T1 T3 by T2 square is equal to 1. So T1 T3 is equal to T2 square, or T2 is equal to root of T1 T3. This is very, very, very important relationship. Whenever you want maximum work, for maximum work, the temperature at the end of compression is the geometric mean of maximum and minimum temperature. ये बहुत important relationship है. Is it okay, my dear students? बोलिए सर. Yes, अब देखो. For maximum network,
But already you know, product of odd temperatures is equal to product of even temperatures. Okay. So what will be T4, sir? T1, T3. So maximum work के लिए what is T2? Root of T1, T3. So ये root T1, T3 कट जाएगा. So you will get root of T1, T3. What is your observation? Whenever you want the net work to be maximum, T2 and T4 are same and it is equal to root of T1, T3. So ये बहुत important equation है sir. For maximum net work, temperature after compression is equal to temperature after expansion and that is equal to root of T1, T3. Absolutely fine. बहुत बहुत important equation है sir. क्या आपको समझ में आया sir ये? If you say yes, then I'll proceed, sir. Correct? Correct, correct? No. तो इसका एक बार प्लॉट करके देखेंगे ऑन टीएस डायग्राम. So T2 and T4 are same. This is the cycle for maximum network. अभी समझ में आया सर? Yes. And that is equal to root of T2, T4 are same. That is root T1, T3. Very good, sir. अब आगे बढ़ते हैं, sir. We will find out the pressure ratio corresponding to this. What is pressure ratio, sir? Pressure ratio. इधर देखो, मैं लिख रहा हूं. The pressure ratio to which the pressure ratio at which the net work is maximum is known as optimum pressure ratio. Okay. So अब देखो T2 is equal to root of T1, T3. Excellent, sir. You tell me what is the pressure ratio, sir? Pressure ratio is T2 by T1 is equal to Rp power gamma minus 1 by. Already you know this equation because 1 to 2 is reversible adiabatic compression. So 1 to 2 is reversible adiabatic. So T2 by T1 is equal to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma. But P2 by P1 is Rp. This is the pressure ratio. Wait. So, but I want this optimum. Whenever you want optimum, you put the condition for optimum pressure ratio. Optimum pressure ratio means जहां पे वर्क मैक्सिमम है. वर्क मैक्सिमम के लिए T2 क्या होगा? रूट T1 T3 पुट करो. So therefore Rp optimum पावर गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया. और अगर यहां पे ऑप्टिमम पुट कर रहा हूं तो T2 क्या होगा? रूट T1 T3 बाई T1. सो अब देखो Rp optimum रूट ऑफ गामा माइनस 1 बाई गामा इज इक्वल टू, ये क्या होगा सर? आई थिंक वी कैन राइट दिस एज, मित्रों देखो रूट T1 देखो रूट रूट से गया तो T3 by T1 का रूट मतलब by 1/2. yes, absolutely. So if you want the optimum pressure ratio T3 by T1 पावर, तो ये उल्टा हो जाएगा सर. तो ये उल्टा हो जाएगा तो इट विल बी गामा बाय twice of gamma minus 1. correct? And please, I request everyone to remember this. And T3 is the maximum temperature, T1 is the minimum temperature. So the optimum pressure ratio is equal to, the optimum pressure ratio is equal to maximum, T3 is maximum and T1 is minimum, whole power gamma by twice of gamma minus 1. This is very, very important. Is it okay, sir?
बताइए, what is this pressure ratio? This is a pressure ratio where the net work is maximum. This is the pressure ratio where the net work is maximum. Agreed, sir? Okay, sir. देखो एक बार देखो. So now, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार इधर आइए. What is the optimum pressure ratio, sir? Or this can also be written as, ये हमारा इक्वेशन हो गया. करेक्ट. ओके, अब देखो, let us assume that this is the maximum temperature. The maximum temperature is T3 and the minimum is T1. ठीक है सर. Okay. Now I have one question, sir. देखो मित्रों, what is the pressure ratio for this, sir? इसका pressure ratio T2 by T1 is equal to P2 by P1 gamma minus 1 by gamma. Now there is one term known as maximum pressure ratio. Do not get confused between optimum pressure ratio and maximum pressure ratio. Optimum pressure ratio is that ratio where the net work output is maximum. ठीक है सर. नाउ आई एम राइटिंग मैक्सिमम प्रेशर रेशियो. व्हाट इज मैक्सिमम प्रेशर रेशियो? देखो देखो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम कंप्रेसिंग. लुक एट, मैं कंप्रेस किया यहां तक और हीट सप्लाई कर रहा हूं. तो क्या मैं इस प्रेशर रेशियो को यहां से लेकर मैक्सिमम बोल सकता हूं? नहीं. और कंप्रेस कर सकते आप, और कंप्रेस कर सकते. बहुत बढ़िया. सो देयरफॉर मित्रों इधर देखना, इधर देखो मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो. देखो इधर देखो, कंप्रेस कर रहा हूं. इज इट द मैक्सिमम प्रेशर रेशियो? कंप्रेस कर रहा हूं. इज इट मैक्सिमम? नो. कंप्रेस कर रहा हूं. इज इट मैक्सिमम? नो. कंप्रेस कर रहा हूं. यस. कैन आई कंप्रेस बियॉन्ड दिस? इसके बाद में कंप्रेस कर सकता हूं सर. कैन आई कंप्रेस? नो. इफ आई कंप्रेस इट विल गो बियॉन्ड. सो देयरफॉर this is the maximum pressure ratio. This is the maximum. Now let me write this as 2 dash. अब मुझे बताओ, if I go for a maximum compression, if I go for maximum compression, can I supply heat? मैं मैक्सिमम कंप्रेस करने के बाद क्या मैं हीट को सप्लाई कर सकता हूं सर? नहीं. अगर आप करेंगे तो क्या होगा सर? अगर आप करेंगे तो इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर, इट विल क्रॉस दैट मैक्सिमम लिमिट. सो देयरफॉर आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा. तो क्या होगा? व्हेन यू डू नॉट सप्लाई एनी हीट यू विल नॉट गेट एनी वर्क. तो क्या होगा? जैसे कंप्रेस कर रहे हैं वैसे ही वापस आ जाएगा सर. मींस आपको नेटवर्क जीरो मिलने वाला है. मतलब मैक्सिमम तक कंप्रेस किए लेकिन कोई हीट सप्लाई नहीं किए. व्हेन यू डू नॉट सप्लाई हीट इट विल कम एज इट इज ऑन द सेम लाइन. तो कंप्रेशन वर्क और एक्सपेंशन वर्क सेम होगा, तो क्लोज एरिया नहीं मिलेगा, तो नेटवर्क क्या होगा? जीरो. मींस मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे आपको नेटवर्क जीरो मिलने वाला है. इज इट क्लियर सर? You people have not understood, sir. मैं दोबारा बताता हूँ. Let me repeat, sir. Let me repeat. इधर देखो. I have compressed it to maximum pressure ratio. This is the maximum pressure ratio. Can I cross this? No, that's your maximum. तो यहां से can I supply heat? If I supply heat, the temperature will increase. But if it increases, it is crossing this. तो कुछ नहीं कर सकते. Compress करो और heat supply नहीं कर सकते. When you do not supply any heat,
जैसे कंप्रेस किए वैसे ही वो रिटर्न आ जाएगा। तो जितना कंप्रेशन वर्क है उतना ही एक्सपेंशन वर्क मिलेगा। इफ आई गिव कंप्रेशन वर्क एज 50, एक्सपेंशन वर्क इज 50, नेट वर्क विल बी जीरो। सो मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे आपको नेटवर्क जीरो मिलने वाला है। इज इट करेक्ट सर? क्लियर सर? करेक्ट। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, लेट मी रेट मैक्सिमम प्रेशर। इधर देखो, मान लो ये प्रेशर रेशियो है, लेट अस से ये P2 डैश है। क्या हम इसको क्रॉस कर सकते हैं? नहीं। सो देयरफॉर देखो एक बार, दिस इज P1, P2 डैश बाई P1, ये P2 डैश है सर, P2 डैश बाई P1 इज इक्वल टू T2 डैश बाई T1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। करेक्ट ना सर? बिकॉज 1 to 2 डैश इज रिवर्सिबल एडिबेटिक। T2 डैश, सॉरी देखो गलत है सर, गलत है, ये तो गलत है। चलो कोई बात नहीं सर। हाँ, T2 डैश बाई T1 इज इक्वल टू T2 डैश बाई T1 इज इक्वल टू P2 डैश बाई P1 पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। इज इट करेक्ट सर? T2 dash by T1, T2 dash by T1 is equal to 1 to 2 is reversible adiabatic. T2 dash by T1 is P2 dash by P1. But what is P2 dash by P1? This is the maximum pressure ratio. This is the maximum. देखो P2 dash by P1 क्या इससे ज्यादा हो सकता? नहीं। This is your maximum pressure ratio. So therefore, my dear students, I'll write this as T2 dash by T1 is equal to, इसको बोलेंगे maximum pressure ratio। ठीक है सर, वंडरफुल सर। बट व्हाट इज T2 डैश सर? इधर देखो, व्हाट इज T2 डैश? एनीवन इन द क्लास, व्हाट इज T2 डैश? T2 डैश इज आल्सो इक्वल टू T3। सो यहाँ पे T2 डैश इज आल्सो T3 और T मैक्सिमम। सो देयरफॉर T2 डैश इज आल्सो T3। दिस इज RP मैक्सिमम पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। एक्सलेंट सर। दिस T3, ओके। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर रेशियो चाहिए तो जस्ट उल्टा करो, इसको रिवर्स करो। आरपी चाहिए, ये पावर निकाल देना। सो इट विल बी T3 बाई T1 पावर गामा बाई गामा माइनस 1। बट व्हाट इज T3? इट इज T मैक्सिमम। व्हाट इज T1? इट इज T मिनिमम। सो पावर गामा बाई गामा माइनस 1। इज इट ओके सर? नाउ यू टेल मी, what is the relationship between, मेरे प्यारे दोस्तों, what is the relationship between optimum pressure ratio and maximum pressure ratio? एक सेकंड देखो, एक सेकंड देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सर? इधर देखो, आरपी ऑप्टिमम इज इक्वल टू टी मैक्सिमम बाई टी मिनिमम। हाँ, पावर पावर गामा बाई गामा माइनस 1 होल पावर 1/2 लिख सकता हूं सर। देखो ये तो 1/2 है, बट ये क्या है सर? टी मैक्स बाई टी मिनिमम गामा बाई गामा माइनस 1 इज आरपी मैक्सिमम। सो आई विल राइट दिस एज आरपी ऑप्टिमम इज इक्वल टू टी मैक्स बाई टी मिनिमम गामा बाई गामा माइनस 1। टी मैक्स बाई टी मिनिमम गामा बाई गामा माइनस 1 इज आरपी मैक्सिमम। इसको आरपी मैक्सिमम लिखेंगे। दिस इज आरपी मैक्सिमम पावर 1/2, और the optimum pressure ratio is equal to root of maximum pressure ratio। एग्जाम में पूछ सकता सर, the maximum pressure ratio is 9 in a gas turbine cycle, what is optimum pressure ratio? It is root 9, that is 3। नहीं आ रहा है सर? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मैं बता रहा हूं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। कितना नीटली बिना टाइम वेस्ट के हम कर रहे हैं सर। हम बहुत ग्रेट है सर, हम सब लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप हम सब लोग। चलो अब देखो, now I want to plot the pressure ratio versus network। आप जानते हैं सर, मैक्सिमम
से ज्यादा प्रेशर हो ही नहीं सकता। आप बताइए ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे वर्क क्या होगा सर? यू नो ऑप्टिमम प्रेशर रेशियो पे वर्क इज मैक्सिमम सर। वेरी गुड। एंड एट maximum pressure ratio, what is the work? At the maximum pressure ratio, what is the work? अभी तो देखो, at maximum pressure ratio कंप्रेस कर रहा है, मैक्सिमम तक कंप्रेस कर रहा है, हीट सप्लाई हो ही नहीं सकता और वो रिटर्न आ रहा है, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन वर्क सेम है, तो नेटवर्क विल बी जीरो, नेटवर्क विल बी जीरो। करेक्ट है सर? सो देयरफॉर मैक्सिमम प्रेशर रेशियो पे अगर प्रेशर रेशियो मैक्सिमम है, वर्क इज जीरो, तो वर्क जीरो मींस हॉरिजॉन्टल प्रेशर रेशियो यहां पे। वेरी गुड सर। एंड व्हाट विल बी द वर्क व्हेन द प्रेशर रेशियो इज 1? अभी तो बताया, efficiency is 1 minus 1 by RT power gamma minus 1 by gamma. Efficiency is net work by heat supply. When the pressure ratio is 1, 1 power something is, देखो एक बार, 1 power something is 1, 1 by 1 is 1, 1 minus 1 is 0, मतलब RP1 पे ये 0 आ रहा है। जब ये 0 आ रहा है, कहां गया, जब ये 0 आ रहा है तो नेटवर्क क्या होगा? 0 होगा। इट मींस देयर इज नो, देखो व्हेन प्रेशर रेशियो इज 1, इट मींस कोई कंप्रेशन नहीं है। प्रेशर रेशियो 1 का मतलब बिफोर कंप्रेशन आफ्टर कंप्रेशन इज सेम। जब कोई कंप्रेशन नहीं है तो कोई एक्सपेंशन नहीं होगा, सो देयरफॉर दिस इज 0। So when the pressure ratio is 1, network is 0. When the pressure ratio is optimum, work is maximum. When the pressure ratio is maximum, work is 0. So therefore, now the graph is something like this. So have you understood this, sir? बोलो मित्रों। हो गया सर जी? हो गया सर जी? हो गया सर जी? क्योंकि बच्चे ही नहीं बोल रहे, क्लास में कोई स्टूडेंट्स है ही या नहीं है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। ये साइकिल समझ में आया सर? आया ना? यस। नाउ देखिए, रीजनरेशन इन गैस टरबाइन। रीजनरेशन का मतलब इंटरनली हीट यूज कर लेना, नॉट एक्सटर्नली। ठीक है सर। अब देखो मित्रों, थोड़ा 10 मिनट के बाद आई वांट टू डिस्कस, मतलब फर्दर क्लासेस, क्योंकि ना अब मेरे क्लासेस थोड़े दिन के लिए एंड हो जाएंगे। आई विल बी कमिंग अप विथ इंडस्ट्रियल देन मैथमेटिक्स। आई विल बी कमिंग अप विथ इंडस्ट्रियल एंड मैथमेटिक्स। ओके, मैथ्स तो देखो अब मैं क्या बोलूं, बहुत रेडी प्लान करके रख दिया मैं, और कुछ डिस्कस भी करूंगा। चलिए मित्रों, अब देखो,
मित्रों 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 मित्रों, दोस्तों 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 दोस्तों, देखिए सर, चलो एक साइकिल ले लेंगे। देखो सर, इफ यू ऑब्जर्व दिस मेरे प्यारे बच्चों, what is T2? Temperature at the turbine exit. What is T4? What is T4? क्या बोलता है ये सर? प्रीवियस मैथ्स रिवीजन करके आए क्लास में। अच्छा, देखो ना, मुझे बताइए, एक्चुअली थोड़ा कॉमन सेंस यूज करेंगे सर। दिस इज द हीट सप्लाई। हाउ कैन यू सप्लाई हीट, ये बताओ पहले। बाय बर्निंग फ्यूल। By burning fuel means I have to purchase fuel, then I have to burn the fuel. That fuel will release it. Means it is actually input from my pocket. So if I burn more fuel, it will be more costly. If I burn less fuel with the same efficiency, it will be good side. Yes, sir. क्या ऑब्जर्व किए सर आप मेरे प्यारे बच्चों? क्या ऑब्जर्व किए? The observation is here, from here you are supplying heat, the temperature is increasing. आप एक बार देख लेना, the temperature at the compressor exit is less, the temperature at the turbine exit is more, and from 4 the heat is going waste to surroundings. From 4 the heat is going, ये तो rejection है ना सर, this is the rejection and this is going waste to surroundings, and यहां से आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है सर, एक बार देखो, आराम से, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, देखो, देखो, What is the temperature at, अरे थोड़ा जगह चाहिए सर मुझे यहाँ पे। I'll use sir. What is the temperature at, ध्यान से सुनो, what is the temperature at 4? Definitely it is more than, देखो एक सेकंड, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। Let this temperature be some, यहाँ पे लिखेंगे some 400 Kelvin, 400, let T2 be 400 Kelvin, or let this be some 700 Kelvin. So let T4 be 700 Kelvin. Just एक एग्जांपल दे रहा हूं सर। And T2 is 400 Kelvin. ठीक है सर, ठीक है। ये तो वेस्ट जा रहा है ना सर। फ्रॉम 700 एवरीथिंग इज गिवन आउट टू सराउंडिंग्स, फ्रॉम 700 एवरीथिंग इज गोइंग वेस्ट टू सराउंडिंग्स। थर्मल एनर्जी वेस्ट करना तो पाप है सर। क्या कर सकते सर? यू आर इंजीनियर्स, यू आर टॉप क्लास इंजीनियर्स, व्हाट कैन यू डू? अरे यार,
यहां से जो गैसेस आ रहे हैं इसको कुछ हीट एक्सचेंजर लगा के यहां से जो गैसेस आ रहा है उसको एंट्री करवाओ। देखो तो दिस गैस यहां से तो हीट सप्लाई करना है, सो वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर। तो वट एवर देखो यहां पे आई विल इंट्रोड्यूस अ हीट एक्सचेंजर, आराम से टेंशन नहीं लेने का। तो दिस इज एंटरिंग एट T4, ये आ रहा है T4 700। और ये जो कंप्रेसर का एग्जिट है ना, आराम से टेंशन नहीं लेने का। अब डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं, ये कंप्रेसर एग्जिट से, देखो देखो एक सेकंड, कंप्रेसर एग्जिट से इधर ले जा रहा हूं सर। बहुत बढ़िया सर, आया सर समझ में मित्र? ओके ओके, मैं कुछ अच्छा नीट डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हैं। दिस इज अ हीट एक्सचेंजर। अरे यार, सो दिस इज कमिंग एट 400 केल्विन, बाहर आ रहा है सर। दिस इज टेम्परेचर T2 और बाहर आ रहा है सर। देखो देखो, देखो T4, yes, what is this temperature? 700. T2, it is 400। 400 से देखो, ये 400 से इधर आ रहा है, तो ये 700 से इधर आ रहा है। So definitely the one which is at higher temperature, that will give heat to my fluid. So whatever the fluid is coming from compressor, that will absorb heat because its temperature is less. So the temperature of the air which is coming from compressor will increase. Let it be equal to some x. बात समझ में आ गई सर? बात समझ में? अब ये T4 से let it be equal to Ty, let it be y, तो क्या होगा सर? इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो नाउ the this is absorbing it, जो 2 पे आ रहा है, it is absorbing it, so its temperature is increasing, let it be x, and its temperature is decreasing, let it be some y। तो हो क्या रहा है सर, जो हीट सप्लाई कर रहा है, अब यहां ऑलरेडी यहां से यहां लाए, originally I was supplying from this to this, now already this heat is taken from the hot gases which are going waste, which were earlier going waste, जो waste जा रहे थे उसका heat recover करके, that recovery of heat we call it as regeneration, इतना heat recover कर लिए। अब जो सप्लाई करने का है यहां से यहां नहीं है सर, सिर्फ यहां से यहां, तो क्या होगा सर, हीट सप्लाई कम हो जाएगा सर। Agreed? So now originally the heat rejection was, from 4 to 1, now already this heat is recovered here, now only this heat is rejected। जो रिजेक्शन हो रहा था वो कम हो रहा है, जो सप्लाई हो रहा था वो उतना ही है, कम हुआ, सप्लाई कम हुआ, रिजेक्शन कम हुआ, तो एफिशिएंसी क्या होगा एक बार बताओ। देखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क बाय हीट सप्लाई। Are you touching compressor? Net work is dependent on turbine and compressor difference. So are you touching compressor? No, उतना ही रहेगा। Are you touching turbine? No. So regeneration से neither you are touching compressor nor you are touching, only जो heat supply और rejection हो रहा था उसी में बदलाव आया सर। So always remember, he may be confusing you in examination with regeneration, as the efficiency is increasing, the network will also increase। गलत स्टेटमेंट है सर। रीजनरेशन हैज नथिंग टू डू विथ, दोबारा बता रहा हूं सर, रीजनरेशन हैज नथिंग टू डू विथ नेटवर्क। सो कंप्रेशन वर्क और एक्सपेंशन वर्क उतना ही रहेगा। सो इसीलिए नेटवर्क में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। समझ में आ रहा है सर? फर्क क्या पड़ रहा है? नेटवर्क, देखो आप ना कंप्रेसर को चेंज कर रहे हैं ना टरबाइन। देखो कंप्रेशन वर्क टच नहीं कर रहा है, टरबाइन वर्क टच नहीं कर रहे, सिर्फ सप्लाई, वो रीजनरेट, यू आर ट्राइंग टू यूटिलाइज दैट वेस्ट हीट। सो इसमें बदलाव आ रहा है।
Neither you are touching compressor nor turbine. So there is no change in the network. This is constant. But what is happening to the heat supply? This much heat is recovered from the waste gases. Instead of supplying from 2 to 3, now you are supplying only x to 3. So therefore, heat supply is decreasing. So when this is constant, when this is decreasing, efficiency will increase. So regeneration in a gas turbine always improves efficiency. मित्रों 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 नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. देखो देखो एक सेकंड, यहां पे कुछ इक्वेशंस लिखेंगे. आप बताइए, व्हाट इज द टरबाइन वर्क सर? Turbine work is 3 to 4. So therefore, H3 minus H4, but H3 is CPT3, H4 is CPT4, it is T3 minus T4. And what is compressor work? The compressor work is 1 to 2, H2 minus H1. So CP into T2 minus T1. So network आ जाएगा सर. So network is turbine minus compressor. So turbine minus compressor. ठीक है सर. Now what is the heat supply, sir? You are supplying heat not from 2 to 3. Now you are supplying from x to 3. Therefore it is H3 minus Hx. This can be written as Cp into T3 minus Tx. Absolutely fine. So what is the heat rejection, sir? The heat rejection is not 4 to 1. It is y to 1. So therefore, Cp into Ty minus T1. Absolutely, Cp Ty minus T1. Have you understood, sir? There is one term used known as effectiveness of a regenerator. देखो, effectiveness इसको मैं हटा दूंगा सर, क्योंकि you have already understood. Now I'll go for effectiveness of a heat exchanger. The effectiveness of a heat exchanger is defined as the actual gain of heat. What is the actual gain? 2 say x tak by ideal gain. What is the ideal difference? The ideal difference is 4 say 2. The actual it is gaining only this much. So actual gain is hx minus h2 by actual gain by ideal gain. Ideally it is ideal कितना possible है sir? 4 से लेकर 2 तक. So therefore it is H4 minus H2. So this can be written as CP हटा देना, Tx minus CPTx CPT2 CPT4. So therefore it will be CPT4 minus T2, and this is my effectiveness. Sometimes we also call it as a thermal ratio. Have you understood, sir? अभी मैं रोक दूंगा सर, कुछ बातें करना है आपसे. सो इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग है, दे आर वेरी सिंपल, यू कैन डू इट. सो आई थिंक होप यू लव्ड दिस कोर्स. मतलब जितना भी मैं कवर किया आपको समझ में आया सर. अब ऑटो डीजल साइकिल मैं बाद में कवर करवा दूंगा. सो दिस इज ऑफिशियली द क्लोजिंग ऑफ आवर क्या बोलते हैं अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स ऑफिशियली. लेकिन क्वेश्चंस करवाऊंगा सर, क्वेश्चंस ब्यूटीफुल करवाऊंगा. क्या आपको थ्योरी पूरा फायदा हुआ? सफिशिएंट सर, बिल्कुल सफिशिएंट. अब न्यूमेरिकल्स करना है सर, एंड आई विल बी डूइंग क्लास न्यूमेरिकल्स. क्लास मींस क्लास न्यूमेरिकल्स. इज इट ओके? क्लास न्यूमेरिकल्स. लेकिन मैं एक ऑब्जर्व किया सर, आई एम रियली हर्ट. क्या है ना, बच्चे इंटरेस्ट शो करने वाले बहुत कम है सर. those who are showing interest, they are very less number of students. बिल्कुल रीजनरेशन वहां पे भी होता है, क्यों नहीं होता है? मैं नोट्स में भी दिया, एक बार देख लेना सर. क्रैश में जितना पॉसिबल है उतना किए सर. क्रैश में जितना पॉसिबल है उतना किए.
because there is a constraint of time on us. ठीक है, अभी now I'll be doing questions, लेकिन condition क्या है ना, I'll be doing questions, but I may be doing it on YouTube or on Plus. तो मुझे लगता है Plus सही रहेगा ना, यहाँ पे भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट देर आर सम स्टूडेंट्स हु केम रेगुलरली, तो मेरा नेक्स्ट कोर्स शायद मैथ्स या फिर इंडस्ट्रियल शुरू होगा क्रैश कोर्स के लिए, और प्लस पे मेरा नया कोर्स आ रहा है, वो प्रैक्टिस कोर्स, पूरा रिवीजन कोर्स थर्मो के लिए। एनीथिंग मोर, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? अभी कुछ आपको पूछना है सर? अच्छा, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं सर, नेक्स्ट कोर्स कौन सा चाहिए, इंडस्ट्रियल और मैथमेटिक्स। क्लास के बाद जो कमेंट्स होते हैं ना, पूरा लिख देना, जो भी चाहिए, नेक्स्ट कोर्स क्या चाहिए, ठीक है? मैथमेटिक्स, अरे आप लिख दीजिए सर, आई टेक केयर। आज भी मेरा क्लास, मैथमेटिक्स क्लास इज हाईली वॉच्ड क्लास, इफ यू वांट आई विल गिव यू प्रूफ। आज भी उतना डेप्थ से कवर किया सर, बट वो दैट मैथ्स कोर्स इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट, आईआईएससी इंटरव्यूज के लिए काम आएगा, सॉम, हीट ट्रांसफर, सबके लिए, बार्क इंटरव्यूज के लिए काम आएगा, बिकॉज आई एक्सप्लेन ग्राफ्स so neatly, modulus function, then all those I had explained so neatly. अच्छा, व्हाट इज योर डाउट संजू प्रजापति? मैथ्स को रिवीजन करके आए क्रैश कोर्स में, हाँ थोड़ा बहुत रिवीजन करके आना, नहीं तो भी आई सी दैट, मतलब मेजर पॉइंट्स टच करूंगा, ठीक है? अगर रिवीजन करके आएंगे तो बेहतर रहेगा सर, अगर रिवीजन करके आएंगे तो बेहतर रहेगा। The schedule is next week. This week I will not cover, next week. So therefore my sincere request is you complete. Okay, anything more, any expectations, anything more? See, after the class, when the class is over, आपके जो requirements है, and how was this applied thermodynamics course, कैसा रहा, आपको given short time में करवाया सर, and have covered it in a PDF, तो already मैं भेज रहा हूँ ना सर, regularly I am giving it to management, तो PDF भी मिल रहा है आपको, PDF भी मिल रहा है सर आपको। गेट के लिए कंप्रेसर्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, गेट के लिए नॉट दैट, बट अब मैं बोल नहीं सकता हूं कि अगर इफ आई से नॉट इंपॉर्टेंट, इफ वन क्वेश्चन कम्स यू विल बी ब्लेमिंग मी। जनरली जनरली कंप्रेसर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। केतन ने एक सवाल पूछा है सर, आई स्वेयर ऑल क्वेश्चंस दैट आई हैव टेकन आर फ्रॉम एक्सी, जो अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस है ना, 2007 से लेकर 2025 तक मैं इंक्लूड किया सर, 18 साल के सारे अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, पहले आप पूरा थ्योरी कवर कर लेना, वॉट एवर आई हैव कवर्ड हियर, ऑल द थ्योरी यू कवर, जब हम क्वेश्चंस आएंगे ना, धुआंधार करेंगे सर, ये मेरा प्रॉमिस है सर। Chetan, it's my promise, you love every question and you love the method of attacking, not just questions, you love the depth, मतलब जिस डेप्थ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आप एंजॉय करेंगे सर, इट्स माय प्रॉमिस, मैं आपको बोल रहा हूं, यू विल लव दैट। Yes, how to revise efficiently. So for revision, don't solve all questions. Those questions which you feel as tough and difficult for you, try to solve them. And don't go for all the derivations, just see in derivations what are the assumptions, then you revise formulae. So that is very important, you can save some time for that.
ओके जगदीश, एंड ये मेरा वादा है सर कि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस धुआंधार क्वेश्चंस करवाऊंगा सर। ऑलरेडी मैं रेडी हूं सर, बिकॉज इस क्रैश कोर्स में देर इज अ कंस्टेंट ऑफ टाइम, इसलिए आई हैव नॉट स्ट्रेचड। तो नेक्स्ट मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी मिल गया कि नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आई एम एट फ्लेक्सिबिलिटी, वो इंडिपेंडेंटली आई विल बी कवरिंग। एनीवे यू हैव कवर्ड द थ्योरी ना, आपने ऑलरेडी यहाँ पे थ्योरी कवर कर लिया, तो इसीलिए व्हेन द थ्योरी इज ओवर सर, अब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये मेरा वादा है सर कि एक एक क्वेश्चन मजा आएगा सर आपको। क्योंकि आप ना, देखो सर, मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं, वो है ये है, ओ आ गया ओ, कोई नहीं, सिंपली आ गए, कंटेंट दे दिए, बस खत्म। 12 घंटे में पूरा देखो, वीसी साइकिल, साइक्रोमेट्री, ब्रेटन साइकिल, 12 घंटे में एक बार देखो सर कितना क्रिस्प था। ये सर नो, कहां पे होगा? जहां पे भी होगा आपके लिए फ्री होगा। इट मीन्स ऑन यूट्यूब और ऑन स्पेशल क्लास प्लेटफॉर्म। तो स्पेशल क्लास एनीवन, जस्ट आपको ऐप डाउनलोड करना है सर, दैट्स इट। आइदर स्पेशल क्लास और यूट्यूब, प्रिफरेबली आई विल डू इट ऑन यूट्यूब, लेकिन आप लोग उस दिन कंप्लीटली फ्री रख लेना सर, क्योंकि पूरा मे बी अराउंड 50 प्लस क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग, 23 ऑन साइक्रोमेट्री, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन 27 ऑन these cycles, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकिन साइकिल, ब्रेटन साइकिल। ओके, एनफ सर, एनफ। ठीक है, सो आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू ऑल। तो अब थोड़ा ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद आइदर आप कमेंट में शेयर करना, आइदर मैथमेटिक्स और इंडस्ट्रियल, जो भी चाहिए कमेंट में शेयर करना। और ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स इतने कम समय में कैसा हुआ, वो भी कमेंट शेयर करना सर। आई वांट मेनी कमेंट्स फ्रॉम यू, दिल से। ओके, चलो बाय बाय, आई एम एंडिंग द सेशन, बाय बाय, बाय बाय।